हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्वेट एकेडमी। सभी को आपका मेरा चैनल पे स्वागत है। खास करके स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और मेरे सारे दोस्तों को मुझे बहुत खुशी हो रहा है जान के कि मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर भी अच्छा है और व्यूज़ भी अच्छा आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी लोगों से इन फ्यूचर में और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। आज मैं एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर 2 लेके आया हूँ। डेप्रिसिएशन मैंने प्रीवियस वीक में एक वीडियोस अपलोड किया था जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन एंड डेप्रिसिएशन का दो मेथड्स के बारे में बताया था। Today I am going to share with you some insights as well as one examples of depreciation. Depreciation का जर्नल एंट्रीज क्या होता है और depreciation अकाउंटिंग कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको। देखिए, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, इसमें आपको एंटरटेनिंग कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर देखोगे, आप अगर स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में काम करते हो, उसके लिए ये बहुत यूजफुल होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये सारे चीजें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है, लेकिन जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, जो मैं न्यू एडवांस टेक्निक के साथ चीजों को सीखना होता है, वो जो मैं बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। बाकी डेप्रिसिएशन सभी लोग जानते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग सभी को आता है, ये सभी को मालूम है, लेकिन द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ लर्निंग is different in my channel. So please go through these videos and like, share and hit the bell icon for my upcoming videos. Please subscribe my channel. So let's start. Depreciation is the systematic allocation of tangible assets over its useful life. So depreciation जब भी होता है वो tangible assets के ऊपर चार्ज होता है over the period of its useful life. आपको पता होगा. It reflects the reduction in the assets value due to wear and tear. आपका अगर आज एक एसेट्स वैल्यू 1 लाख है और आप 1 साल बाद उसका एसेट्स वैल्यू देखने जाओगे, सपोज एक मशीनरी है तो उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है, ड्यू टू वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंस और अदर फैक्टर्स आल्सो. Depreciation is an important concept in accounting as it helps in matching the cost of an assets to the revenue it generates. देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इसमें आपका एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, जो कॉस्ट है और रेवेन्यू है, इसका प्रॉपर मैचिंग होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट अराइव एट द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल फिगर, एक्चुअल ट्रू एंड फेयर व्यू, you can say, right? So that is why depreciation expenses will be allocated over the period in your P&L account so that it can match the revenue. अभी हम एक एग्जांपल पे चले जाते हैं. लेट्स से a company purchase a machine of $10,000, right, with an estimated useful life of 5 years. एक मशीन परचेज किया है जिसका कॉस्ट है आपका $10,000 और आपका एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 years. The salvage value or residual value, you can say, or you can say scrap value at the end of 5 years will be $1,000, right? इसका मतलब जब ये मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ खत्म हो जाएगा तो आपको $1,000 मिलेगा एज सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू. So there are situation machine cost is 10,000, its expected life is 5 years, and you will get $1,000 as scrap value, right? So what should be the journal entries in this case, in this transactions?
सो टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन, जब मैं मशीनरी को परचेज कर रहा हूं तब मेरा जर्नल क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और अकाउंट्स पेबल। अब मेरे डेबिट क्रेडिट रूल्स का जो वीडियो है, जो फंड कंसेप्ट से मैंने बनाया था, अपलोड किया था, उसमें मैंने क्लियर कट डिफाइन किया था व्हाई an account should be debited or why the other account should be credited. So here machinery is an assets and your assets is increasing, right? So A plus will be debited, and the second one, if you are purchasing the machinery in cash, then cash account will be credited. In that case, assets account will be minus because your assets is decreasing, right? Or if you are purchasing, अगर आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, तो आपका अकाउंट्स पेबल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होगा. इन दैट केस योर लायबिलिटी विल इंक्रीज, सो एल प्लस. So machinery account debit to cash or accounts payable. It depends upon whether you are purchasing the machine in cash or credit, right? This is the first entry. Now the second entry, we are assuming that the depreciation is calculated on straight line method, right? In that case, depreciation expenses account to be debited because E plus and E plus is debited. And how much? 10,000 is your cost. Salvage value is your 1,000. So 10,000 minus 1,000 divided by expected life of years, that comes to $1,800, right? So depreciation account will be debited by $1,800, and accumulated depreciation, guys, it's a contra assets account and it decrease the assets value, right? So A minus will be credited, that is your $1,800 will be credited. So depreciation account debit to accumulated depreciation. Now after 5 years, when the expected life of the machine will be finished or exhausted, then this accumulated depreciation will be debited because this assets value will be increased A plus, and it should be 1,800 into 5 years, that means $9,000. Guys, if I go on recording the depreciation, then accumulated depreciation have a must have a credit balance of 5 into $1,800, that is $9,000, and this has to be nullified by debiting these accounts. Okay, so accumulated depreciation is debit by $9,000. Now I will get $1,000 as salvage value. So my cash is coming. That means assets is increasing. So cash account will be debited. That is your $1,000 has been debited as sale proceeds, and machinery will no longer will be in the books of the company. So assets minus machinery will be exhausted and there will be no assets as machinery. So assets minus, and that will be 1,000. Now you can see that two debits and one credit. One is for depreciation, another one is for sale proceeds receipts, and the other one, the credit one, is assets is gone from your company's books. So these journal entries reflect the systematic allocation of the machine's cost value over its useful life, and recognition of the accumulated depreciation as the asset's value decreases, right? When the machine is sold, its book value is adjusted and any gain or loss on the sale is recorded, right? So if any gain or loss is there, then PL account should be debited or credited accordingly. It depends upon whether it is a profit or a loss. Thank you for watching my videos. Please subscribe, like, share, and hit the bell icon for my upcoming videos. Thank you very much.